हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से राइट, सो हाउ बेसिकली you can speak in English and you can understand every word and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप इंग्लिश एक्सप्लेनेशन सुनते हो और अपना वीडियो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and today we are going to read about a topic which is 3 sacks of rice, right? So let us go ahead and read this chapter. So 3 sacks of rice. Sacks मतलब sacks mean bag. 3 bags of rice. तो 3 sacks मतलब bag, 3 bags of rice. So let us read. You may have read many stories about 3 brothers. Usually 2 of them, the elder ones, are strong, clever but unkind. They laugh at the youngest one because he is too simple and soft-hearted. Our story also has 3 brothers who live in a small town, but they were all 3 of them honest, kind and hardworking. The elder one ran a shop, the middle one was a priest, and the young one had just finished his education. He had started taking up odd jobs to earn some money and learn a trade.
All three of them were fond of their mother. She had worked hard to bring up the three of them after the sudden death of their father. So, the writer is saying, or you can say author is saying, that you have listened about a story, mini story, that there are three brothers, two of them. The elder one, they are strong, clever, but unkind. They are cruel, like for their youngest brother, and the youngest one is so simple and soft-hearted. But this story is different. So the story start telling about three brothers who are hardworking, honest, and kind. The eldest brother ran a shop. The middle brother was a priest, and the third brother, or the youngest brother, has just finished his education. They both, all of them love their mother because she has worked hard to just bring them up. Because their father has died at a young age. One day, their father's friend visited the mother. He said, "Sister, you know that I have a very prosperous business, but now I'm getting old, and my only daughter is of marriageable age. I'm looking for a son-in-law who would be a good husband to my daughter and who would also handle my business well. I like all your sons. If you permit, I will marry my daughter to one of them. But before that, I have a plan." He discussed the plan with her and she agreed quite readily. So, one day, their father's friend visited their mother, and he said to her mother, "The sister, that I am having a prosperous business." That the man who has visited, is having a prosperous business. Prosperous means rich, or you can say successful business. But he's saying, now I'm getting old, and my daughter is of now marriageable age. Now she's ready to marry. She's of age in which age that we can marry. So he said, and he said that he's looking for a son-in-law who would be a good husband to his daughter and who would handle all his business. So he said he like all her son, and if she permit, she will marry her daughter to one of them. But he has a plan because three of them can't marry one. So he suggests that have a plan. I have an idea, and I will test your son, and whoever will pass, he will be eligible for marrying my daughter. He discussed the plan with her and she agreed quite readily. Then he discussed the plan and she said, "Yes, you can continue." The next day, the friend went to each of the three brothers one by one. He gave them each a sack of rice and said, "My dear boy, I'm going away for a few months for some necessary work. Please look after this sack of rice till I came back." The friend went away. Many months passed, but he did not return. It was nearly a year before he came back. He visited the eldest brother first. The eldest brother welcomed him and gave him a small purse full of money. "Uncle, you had left a sack of rice with me. After a few months, I was worried that it may get spoiled. Therefore, I sold the rice to my customer. Here's the money I got. Please accept it." "Thank you, my boy. You are such an honest person." Who replied? Yes, the man who was given the sack of rice. So now he is going to test all of the three. So the next day the friend went to each of the three brothers one by one. So one by one he has gone to three brothers and he gave a sack of rice to each of them. He said, "Please kept it with you. Whenever I will come,
I'm going to for some month. When I will come, I will take it from you. So many months has passed, and he just come before 1 year is going to pass. So he visited the eldest brother first, one of the elder. So he just welcome and give a purse full of money. He say, Uncle, you has left a sack of rice with me. After a few months, I was worried it may get spoiled because rice may get spoiled. They may get insects, you can say, which can spoil the rice. So he say, I sold the rice to my customers, and hence the money I got, please kept it, please accept it because it's your money. So that person who say to him, thank you, my boy. You are such an honest person. I've not seen an honest person like you, because he is giving the money to him. What the sack of rice cost to him. Then the friend went to see the middle brother, who was prized. The priest greeted him with joy and affection, and said, Uncle, remember you had left a sack of rice with me an year ago. I'd kept it for many months, but then I was worried that it may get spoiled. I distributed the rice among the poor in your name. They all bless you for satisfying their hunger. However, I did that without your permission, and I am willing to pay you back for the rice. No, my boy, you acted wisely and kindly. The blessing that I got from the poor people are enough for me. Please, don't even think about the money anymore. So now that friend went to the second son, the middle one, and who was a priest. So the priest greeted him with joy and affection, with love and happiness. And then he said, Uncle, do you remember me? You have given me a sack of rice a year ago. And I was worried, so I have kept for many months, but I think that it will be get spoiled. So I just distribute that rice among the poor people in your name, and they bless you for satisfying their hunger. But I did it without your permission. So please just forgive me, and I'm going to just pay you back the price of rice. So he said, No, my boy, you acted wisely. You acted intelligently. You know, of course, that rice will be. The rice will get insect on it and it will be get spoiled. So you act very good. The blessing of the poor is one of the best, and it's enough for me. So please don't think like that you have about the money anymore. Now, but the friend went to visit the youngest son. He too welcomed him with love and respect. So when the friend he went to the third son or the youngest son, so his youngest son welcomed him with love and respect and affection, obviously respect. But he said that what the youngest son said, he had a confession to make. He want to admit something. Admit matlab? Yes. Act of admitting it, confession. Just to make. The sack of rice was lying with me for a long time. But then I had an idea. I often go to a neighboring farm to help with the work. I borrowed an unused plot of land from the farmer. I exchanged the sack of rice for paddy and sowed the paddy in the plot. Fortunately, the crop grew well and yielded 25 sacks of rice. I have kept back 5 of the sack and sold 20 of them. Here's the money. If you allow, I would like to keep a part of it as my share, considering the labor and money I spent to get it all done. A wide smile spread over the friend's face. He has found his future son-in-law. So, he has confessed, the youngest son has confessed that I was waiting for you, but it was lying for long. So then I have an idea, I have a plan that I've decided that
about it. So he say, I always just work. I often sometimes goes to a neighboring farm. The farm means a land where someone has to do a work, just grow crops or keep animal. So he just moved to a neighboring. He just work in a neighboring farm often, and then he say, I borrowed an unused plot. I have borrowed an unused plot that is not just used from a farmer. The unused plot means that plot is not used by anyone. So he say he has borrowed that from farmer. So he say, and he has exchanged the sack of rice for paddy. So that sack of rice that you have given to me, I've exchanged it with paddy. Paddy is just rice that has not been processed in any way, or you can see they are still in it husk. You have seen them. So he said, I've exchanged that sack of rice with a paddy for growing in rice. So he say he's very fortunately means lucky enough. The crop grew well and produced 25 sacks of rice. I have kept 5 of them and I have sold 20. So here's the money. He say, here's, I'm giving you money. But if you allow me, I will keep a part of it as my share, because I have wastes. I have given money to the labor and I have spent money in all. Then that man, that his father's friend, smiled on his face, and he has found his future son-in-law. He's so happy that he has found a future son-in-law, as he has sold the rice, but he has profit that man. So he from his character he judge him as he will make him prosperous, or you can say he will make prosperous his business again, because he is now old. That friend is now old, and now he is just that, yes, he will be his future son-in-law. Thank you, children. There is things to do for you. Just take it and do. थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़ आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट। 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट। और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ओवरऑल क्या करते, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर। वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके, सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा, और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है, आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग,
एक्सप्लेनेशन, राइट। सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए, और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको। ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, या नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, और उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा। उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे, और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और तब जा कर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए, और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो, और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।